जी आए ਨੂੰ प्यारे विद्यार्थियों 9th क्लास दी साइंस दी बुक दा चैप्टर नंबर 5 दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर दी एक्सरसाइजेस इस वीडियो ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ and we will be doing 4 questions of the exercises of this chapter। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਅਤੇ ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। इसी चैनल के उत्ते यू कैन एक्सैस अदर प्लेलिस्ट्स एज वेल सच एज 9th मैथ जिहदे विच तुहाडी 9th क्लास की मैथ्स की सारी बुक सॉल्व करके पा दी गई है। 9th मैथ नोट्स जिहदे विच मैथ के कॉन्सैप्ट्स मैथमैटिकल टर्म्स की डेफिनेशंस ते कुछ होर इंपॉर्टेंट गल्लां समझाइया गई ने। ते एक हैगी है 9th इंग्लिश MCB मेन कोर्स बुक जिहदे विच तुहाडी इंग्लिश बुक के लैसनस उन्हां दी रीडिंग ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन ते उहदी एक्सरसाइज़ नूं सॉल्व करके पाया गया। सो तुसी इंग्लिश ਅਤੇ मैथ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। Question number 1. Make a comparison and write down ways in which plant cells are different from animal cells. So we have to do comparison between a plant cell and an animal cell. सो इनू टेबल फॉर्म च करांगे आपां। ओके सो इस तरह बना लांगे एंड देयर आर 5 पॉइंट्स विच आर मोर देन इनफ। सो प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स। नंबर 1 सेल वॉल इज प्रेजेंट सेल वॉल इज एबसेंट। ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਡਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈजेंट ਪਲਾਸਟਿਡਸ ਆਰ ਐਬਸੈਂਟ। ठीक है फिर वैक्यूल्स आर लार्ज इन साइज एंड आर सिंगल और फ्यू या एक वैक्यूल होएगा या बड़े थोड़े होंगे एंड देयर साइज इज क्वाइट लार्ज। बट इन द केस ऑफ एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज एंड मोर इन नंबर। उन्होंने गिनती ज़्यादा होएगी पर साइज छोटा होएगा। ठीक है फिर सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। plant cells are generally इतने बच्चों एस नहीं आएगा इतने टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। प्लांट सेल्स आर जनरली रेक्टेंगुलर शेप्ड एंड लार्जर इन साइज। यदि शेप ज़्यादातर रेक्टेंगुलर होंगी है तो दूजी गल इसका साइज थोड़ा वड्डा होंदा है सेल का प्लांट सेल का। एनिमल सेल्स आर राउंड और इरेगुलर इन शेप या राउंड होएगा या मोर और लेस राउंड होएगा या थोड़ी इरेगुलर शेप होएगी एंड आर स्मॉलर इन साइज। सो 5 पॉइंट जोड़े मेन 3 पॉइंट के बच्चों है तो तुहानू कभी भुलना नहीं चाहिए। सैल वॉल प्लास्टिड्स वैक्यूल्स तो बाकी तुम ये 2 होर ऐड कर लेना सेंट्रियोल्स तो शेप एंड साइज ऑफ दी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सो दिस 5 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ। ठीक है आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 हाउ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है नोट्स भी असी कर चुके हैं सो इनू भी टेबुलर फॉर्म च करांगे। ओके प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स है बच्चों बिल्कुल एग्जैक्टली जो तुहाडा एक पेज नंबर 61 ते असी क्वेश्चंस कीते ने शायद ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ क्वेश्चन है। सो साइज इज जनरली स्मॉल और प्रोकैरियोटिक सेल्स 1 to 10 micrometers। यूकैरियोटिक सेल्स साइज इज जनरली लार्ज 5 to 100 micrometers। In prokaryotic cells, nuclear membrane is absent. Nuclear membrane नहीं होती, hence इस करके the nuclear region is poorly defined and it is known as nucleoid। और लिख भी सकते हो या नहीं भी लिखोगे चलेगा। So because it is poorly defined, so that nuclear region is known as nucleoid। ठीक है so in eukaryotic cells nuclear membrane is present and because of this hence the nuclear region is well defined। सो टर्म्स याद कर लो वेल डिफाइंड पुअरली डिफाइंड। ठीक है सो नंबर 3 दे हैव अ सिंगल क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है एंड यूकैरियोटिक सेल्स दे हैव मोर देन 1 क्रोमोसोम्स। ठीक है फिर membrane bound cell organelles are absent। nuclear membrane is also absent and organelles membrane is also absent। so membrane bound cell organelles are absent।
ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਾਉਂਡ ਸੈਲ ਆਰਗੇਨਲਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਇਹ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈਲਸ ਦੇ ਤੇ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈਲਸ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। क्वेश्चन नंबर 3, what would happen if the plasma membrane ruptures? Ruptures में होता है बच्चों फट जाए, फट जाना, tears, और breaks down, मतलब कि खत्म हो जाए, ठीक है। सो पहले देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन की है, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर कि what would happen if it happens to rupture or break down. The plasma membrane encloses the cytoplasm and nucleus within the cell, बल्कि बैरियर है, it encloses the cytoplasm, that is fluid like structure, and the nucleus, ठीक है। फिर it also separates cells from one another, एक सेल का दूजे सेल तो ਇਹਦਾ separation ਹੁੰਦਾ है, and the contents of the cell from the surrounding medium, quite natural, because it is enclosing the cytoplasm, the nucleus. It means it acts like a barrier between the surrounding environment and the cell, ठीक है। The membrane is porous, it has got pores, and is selectively permeable. It is selectively permeable, that means it allows the movement of materials from the cell to the outside and outside to the cell, but selectively. It means it also disallows the movement of certain materials. So if the membrane breaks down or ruptures, the exchange of materials through osmosis and diffusion will cease. Diffusion के through और osmosis के through सारा material जड़ा exchange होता है। The protoplasmic material, protoplasm होता है बच्चों, that includes cytoplasm as well as nucleus, मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर सारा जड़ा मटीरियल है, that means cytoplasm plus nucleus is known as protoplasm. The protoplasmic material will disappear क्योंकि वो rupture हो गई, so there is no longer a barrier between the surrounding environment and the interior of the cell. There will be no control on the movement of the materials from and to the cell. So the protoplasmic material will disappear and the cell will die, ठीक है जी। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, what would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? अगर Golgi apparatus नहीं होएगा तो सेल दी लाइफ ते की असर होएगा? So again we will approach systematically. First we will understand what is Golgi apparatus and what are its functions. क्योंकि अगर कोई चीज़ कम कर दी है, अगर वो बीमार हो जाए या खत्म हो जाए तो ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। So Golgi apparatus consists of a system of membrane bound vesicles. Vesicles means बच्चों small sacs, small bags, arranged nearly parallel to each other in stacks, एक दे ऊपर एक, ठीक है। यह गोल्गी apparatus है। It performs the following functions. ਹੁਣ देखिए कि गोल्गी apparatus ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। Number 1, storage, modification, packaging and dispatching of products in vesicles to various targets inside and outside the cell. ਇਹ ਬੱਚੋ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਲਿੱਤੀ, ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪੈਚ ਕੀਤਾ। So Golgi apparatus, what does it do? It stores, modifies, packages and dispatches the products in vesicles ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ to various targets inside and outside the cell. मतलब कि ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ मतलब ਕਿ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਪੈਕੇਜ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। फिर converting simple sugars to complex sugars and formation of lysosomes. lysosomes बच्चों की है ने, they are the cleansing, they are the मतलब ਜਿਹਦਾ sewerage system ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਤੇ they keep the cells clean, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੋਲਗੀ apparatus ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲਓ ਦੇਖੀਏ। Thus in the absence of Golgi apparatus, storage, packaging and dispatching important materials will stop. खुराक ही नहीं मिलेगी, स्टोरेज नहीं होएगा मटीरियल, ਉਹਦੀ ਪੈਕੇजिंग नहीं होएगी, डिस्पैचिंग नहीं होएगी। सो ਜਿਹੜੇ डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैगे ने, डिफरेंट टारगेट्स हैगे ने इनसाइड द सेल, they were waiting for these products to come
ਐਂਡ ਸਰਵਾਈਵ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਆਫ ਲਾਈਸੋਸੋਮਸ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਸੀਜ਼। ਹੁਣ ਲਾਈਸੋਸੋਮ ਜਿੱਦਾਂ ਟੋਇਲਟ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਆਫ ਲਾਈਸੋਸੋਮਸ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਸੀਜ਼, thus the growth and cleansing of the cell will be affected। growth ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ it will shorten the cell's life। ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਰਥਾਤ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਡਿਸਪੈਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇ ਗੋਲਗੀ ਆਪਰੇਟਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਸ਼ਾਰਟਨ ਦੀ ਸੈਲਸ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਾਡੇ 4 ਕੁਐਸਚਨ। ਬਾਕੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।